We are the sun that rises. No compromises. For us, healthy is not just a trend. It is our weekday. It is our weekend. But health at the cost of taste? A question rises. Not for us, for we make no compromises. The India of today makes no compromises on health or taste. And that is why it chooses US Cranberries. US Cranberries, the taste of health. Hi, I'm Amra Shah. I'm 31 years old and I'm a fitness coach. At my heaviest, I was 115 kg. My current weight is 59 kg and I've lost a total of 56 kg so far. ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली में बड़े हुए तो हमारा जो खाना ही वैसा होता था everyday food was like butter chicken, everyday food was like chicken tandoori, naan, paratha, and sweets. I love sweets. I think I still have a sweet tooth, so खीर हो गए, सिवई हो गए, and chocolates वगैरह. ऐसे, I mean, खाना was like the main focus of my life. Medical complication was school time से, even as a kid, stamina बिल्कुल नहीं होता था. Class में भी I used to feel very bored, continuously yawning, lethargy बहुत होती थी. Even when my friends used to play, मेरा मन ही नहीं होता था खेलने का कि यार कौन अभी जाके दौड़ेगा, कौन अभी जाके इनके साथ खेलेगा. Eventually लाइफ में I got thyroid जो काफ़ी हाई था and PCOD as well. ताने तो लोगों के शायद बचपन से ही शुरू हो गए थे. मतलब अगर मैं सबसे पहला अगर मैं इंसिडेंट याद करूँ तो मैं 7 साल की थी जब मैं रास्ते पे मैं रैंडम लोग स्ट्रेंजर्स मेरे को बुली करने लगे, अलग अलग नाम बोलने लगे, फुटबॉल, मोटी, गोलगप्पा. और उस टाइम कुछ समझ भी नहीं आता था कि एक्चुअली अब क्यों बोल रहे हो. एंड उसके बाद रिलेटिव्स फंक्शंस वगैरह में गए तो कुछ भी बोलना कंपैशन ट्रोलिंग के नाम पे कि यार आपकी कितना वजन बढ़ गया है, आप कुछ करते क्यों नहीं, आप तो अपने पापा की तरह दिखने लगे हैं. एंड ये सब काफ़ी इंसिडेंट्स ऐसा होता है. अब मैं शॉपिंग करने जाती थी तो वो शॉपकीपर देख के ही पहले से बोल देते कि मैडम आपके साइज में नहीं मिलेगा. या स्कूल में थी तो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स जिसमें रनिंग है या जंपिंग इन्वॉल्व है उसमें आई वॉज ऑलवेज ओवरलुक्ड. मैं हमेशा शाय अवे करती थी कि यार मैं इस पिक्चर में मोटी लग रही, मुझे नहीं लेना. आई डोंट वांट टू बी द फैटेस्ट पर्सन इन द ग्रुप. मेंटल हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ा और काफ़ी छोटी उम्र से असर पड़ा. जब इतनी छोटी उम्र में लोग बुली करते थे या ट्रोल करते थे या हेल्थ के नाम पे एडवाइस देते थे तो मेरे दिमाग में ये चलता था कि मुझ में कोई प्रॉब्लम है और मुझे वो फिक्स करना नहीं आता था. बिकॉज खाने पे कंट्रोल नहीं था, राइट अप्रोच नहीं मालूम था. बिकॉज क्या करना है, किस तरीके से वो कंट्रोल करना है, क्या सही है क्या गलत है, वो नहीं समझ में आया. उस टाइम जो समझ में आया कि ठीक है, अगर मैं खाने पे कंट्रोल नहीं कर सकती, let me do one thing. I will forcefully puke it out, which is an actual eating disorder called bulimia. जब मैं 13 साल की थी, then I was diagnosed with depression, and by that time I just used to stay by myself. मैंने फ्रेंड्स को एलिएनेट कर दिया था. मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी. मैं करिकुलम स्कूल जाती थी, स्कूल से वापस आती थी, स्पोर्ट्स नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कुछ नहीं. एंड बाय द टाइम आई was 17, it just got so bad and I used to like cry myself to sleep every night and I did not really have anyone I could confide into. उसके बाद मैंने थोड़ा ध्यान अपने करियर में डाला, थोड़ा ध्यान अपने हेल्थ में वापस से डाला. and I did try to lose weight a lot of times, but again at 25 I was exactly where I was at 17. I moved back home, I didn't have a job, I didn't have any money. I had just alienated all my friends again. And this time it just got too much for me. And it was my 25th birthday night when I tried to attempt suicide again. So that was the impact it had on my mental health. वेट लॉस मैंने करने का सोचा जब मैं 9 साल की थी, लेकिन मैंने सीरियसली तब सोचा not just to lose my weight but also to work on my mental health and to actually transform my life and focus on fitness, not just weight loss. जब मैंने decide किया कि मुझे actually अपने आप पे work करना है, मैं उससे पहले कभी भी mirror में सिर्फ अपना चेहरा देखती थी. I would never look at my body because I didn't want to acknowledge the fact that I was this fat. So when I realized that I want to change, the first thing I did was I looked at myself in the mirror. I took off all my clothes and I looked at everything. I looked at my 50-inch waist, I looked at my stretch marks, I looked at my flabby body, and I made peace with it.
I accepted that this is what it is right now. This is who I am right now. तो मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ वॉकिंग से. मैं अपने घर के टेरेस पे ही वॉक करती थी, बट फिर धीरे धीरे मैं जब जिम जाने लगी, फिर मैं कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मिक्स, I used to do strength training on some days and cardio on some days, and that's how I started with my workout. Initially diet control करना बहुत difficult था because मेरा routine, मेरा lifestyle बहुत अलग था. Like I used to get up in the evening at 4 o'clock and I used to order in junk and I used to eat that till 4 o'clock in the morning. So one thing that I started then, और वो अभी भी मेरा ritual है, is quantified nutrition. I measure everything I eat, and from a workout perspective, I've actually made this a ritual that I will not go without working out for 3 days. So I'm actually following a very, very strict competition bodybuilding sort of diet and workout right now. I start when in the morning on an empty stomach. I have my black coffee, then I go for my workout. Then I come back, I have my breakfast, which is usually egg whites scrambled with oats and blueberries. Then my mid-morning meal is grilled chicken with some rice. My lunch is again grilled fish with boiled potatoes. My pre-workout is usually an apple with some almond butter. Then I go for my workout, and then after that my post-workout is a protein shake. Then at night I'll have some grilled fish or grilled chicken again with some rice. My workout I do twice a day now. Morning I do cardio, which is usually 45 minutes on the treadmill and 15 minutes on the cross trainer. Evening I do strength training, which is divided into muscle groups. So back bicep, I'll do like a bicep curl or a lat pull down or a one arm row, bent over row, shrugs. Chest, shoulder, triceps, I will do mostly your weighted dips. I'll do push-ups. I'll do overhead extension, and I'll do overhead press. Legs is, I love leg days. So I do like a lot of hip thrust. I'll do sumo squats, I'll do goblet squats, I'll do hip abductors, lunges. My weight loss definitely was a healthy one. I mean, जब मैंने start किया था 25 में, so I got this in-body scan done that measures your body's age. And at 25, my body's age was 56, and I got it done recently at 31, and my body's age is 24. So I think it's safe to say that my weight loss was a healthy one for sure. I mean, 56 kg lose करने के बाद life definitely changed. And this transformation was not just कि हाँ मैं पतली हो गई, because for all my life my weight was my identity. जब मैं overweight थी, जब मैं मोटी थी, तो वो मेरी identity थी. लोग बोलते थे अच्छा मावरा कौन, वो जो मोटी वाली ना. And अभी जब मैं लोग मुझे inspiration बोलते हैं, that's because of not just the weight I've lost, but of also how I've battled things. Today, I am definitely emotionally and mentally at a lot better place.